दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे के बेटे, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे सर, पंकज सिंह सर एमएलए नोएडा, हमारे नोएडा से सर पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे सर। ये कहते हैं परिवार बहुत नहीं चलता इनकी पार्टी में, कहाँ से नहीं चलता सर। राजनाथ सिंह जी, like to reply. Your son is a prominent leader of BJP, Vice President of State, MLA from Noida. That you cannot deny. सर राजनाथ सिंह के पास डेटा खत्म हो गया। किससे? गांधी फैमिली के सर। मोहम्मद अली जिन्ना का एनलाइटन अस। मोहम्मद अली जिन्ना का गांधी फैमिली से कनेक्शन है। ये आपने कहा इट्स ऑन वर्बेटम राइट? दिस इज ऑन वर्बेटम एनलाइटन अस। 1 second. सर बिफोर गिविंग स्टेटमेंट इन लोक सभा माइंड आवर वर्ड्स, किसी के कह देने से नहीं बोलना चाहिए। इट विल अफेक्ट योर मार्क्स। ओके सिट डाउन। POI टू whom? अभी स्पीच किसकी हुई है? राइट टू रिप्लाई। ओके नितिन गडकरी। सर ये लोग बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की सीट आप किसी और को नहीं देने बुलाया। See, this is an endless debate. We can make to a point that India is a dynastical democratic country. Okay? No dynastical points cannot be entertained further in this session. Done? Thank you. Shashi Tharoor. Shashi Tharoor. Mike. Honorable Speaker, the Bharatiya Janata Party speaks of Nari Shakti, yet the reality remains concerning. India ranked around the lower half in the global gender gap reports compared to nations like Iceland, Norway and Finland, which consistently lead in women's equality. Female labor force partition in India has remained significantly below many developed nations, showing that the millions of women still lack economic opportunities. Crimes against women continue to rise in reporting, with thousands of cases of domestic violence, harassment and assaulted registration annually. Women hold far fewer leadership and parliamentary positions compared to several global democracies. The BJP government celebrated the Women's Reservation Bill, yet implementation was delayed through census and delimitation conditions. Representation denied. Compare this internationally, New Zealand and Nordic nations invested heavily in equal pay, child care, education and workplace safety. Okay, sir. Sir, how do you compare vast country like India to small country like non-nomadic nations? So, but we can, but we can compare on internationally on the global level from which countries have concluded the and pay for their welfare, the country's welfare, and they are representing the women's empowerment. I am just showing which country have done for their women empowerment, for their women in their country, and what are you doing? You are delaying the delimitation. Okay, sir. No delimitation. Noted, sir. Noted. Any points of information? Can I conclude, sir? Time out. Points of information. Prime Minister. सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं, जब राहुल ममकुता-थिल केस में मल्टीपल सेक्सुअल हरेसमेंट और कोर्शन के गंभीर आरोप उठते हैं और दूसरी तरह की रेप चोरी जैसे मिसोगिनिस्टिक और विवादित बयान पर देश भर में निंदा होती है, तब आपका क्या कहना है? तो क्या राजनीतिक दल बिना जवाबदेही के सच में महिला सम्मान और नारी सुरक्षा की बात कर सकते हैं? क्या आप इन सब चीजों को वैध मान सकते हैं? Noted. Sir. नहीं, how? Her name was not used. She is not from your party. Okay, if you want to reply through a chat. Okay, ma'am, the cases which you have cited on this source format, लिख के भेजिए. Right to reply, then. Asauddin Owaisi. Honorable Speaker and esteemed members of the House. आज जो फैसला होगा वो सिर्फ सीट डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इस डेमोक्रेसी में किसकी आवाज कितनी अहमियत रखती है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल, डेलिमिटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल बीजेपी सरकार लेकर आई, लेकिन सवाल ये है क्या ये बिल्स रिप्रेजेंटेशन मजबूत करेंगे या ये आवाजों को कमजोर करेंगे?